Hello bachchon. So let's read the question. The question says identify the option having the correct chemical or protein in its location. First दिया हुआ है acetylcholine with sarcoplasm. Second दिया है myoglobin with blood. Third दिया हुआ है calcium with sarcoplasmic reticulum. And fourth दिया हुआ है myosin with thin filament. So the key concept for this question is chemicals or proteins of the skeletal system. सबसे पहले skeletal system में skeletal system जो होता है it is made up of two filaments. First is the actin filaments and second is the myosin filaments. These filaments together form the myofibril and they help in the contraction of the muscle. So जो actin filaments होता है एक sarcomere में they form the thin filaments and myosin filaments are the thick filaments. Both of these are proteinaceous in nature. So सबसे most important proteins of the skeletal system are both actin and myosin, which together form the sarcomere. Second, जो muscles होते हैं, muscles have a particular pigment which is called the myoglobin. Myoglobin pigment is different from hemoglobin such that myoglobin specifically सिर्फ muscles में ही present होता है. And secondly, जो myoglobin होता है, the affinity of myoglobin to bind with oxygen is very much higher as compared to the affinity of hemoglobin binding with oxygen. Concentration of myoglobin is high in certain muscles और जिनमें myoglobin high होता है, they give a reddish appearance because ये pigment भी red color का होता है just like hemoglobin. Moreover, जो myoglobin होता है, it stores oxygen and in the presence of mitochondria, it helps in the synthesis of ATP. Moreover, जो muscular contraction होता है या जो muscle contraction होता है, it occurs by the release of a neurotransmitter in the neuromuscular junction या the motor end plate called the acetylcholine. यही acetylcholine it reaches the sarcolemma and then inside the sarcoplasm it releases the calcium ions which are present inside the sarcoplasmic reticulum. जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्म तक पहुंचता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो होता है वो रिलीज होता है इनटू द sarcoplasm. Now this calcium binds to troponin and it releases the active sites मतलब वो एक्टिन फिलामेंट्स के एक्टिव साइट से रिमूव हो जाते हैं. This leads to muscle contraction when the actin filaments they bind to the myosin head.
सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एसिटाइलकोलिन विद सार्कोप्लाज्म। एसिटाइलकोलिन सार्कोप्लाज्म में नहीं रिलीज होता, इट इज रिलीज्ड इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, मायोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड, hemoglobin is present in the blood, myoglobin is the pigment of the muscle cells only. थर्ड, कैल्शियम जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है, इट इज दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, दिस इज राइट। एंड फोर्थ, मायोसिन फॉर्म्स द थिन फिलामेंट, दिस इज रॉन्ग। मायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट्स बनाता है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।